start with chapter number 5, that is industries. So let's study about industry. So an economic activity in which some goods are manufactured or some minerals are extracted, इसको हम industry कहते हैं. So the processing of raw material into finished products such as cotton into cloth, wood pulp into paper, इसको हम manufacturing कहते हैं. It is done with the help of machine. Most of the pen we use like eraser, chair, books, threads, biscuits, clothes, utensils, sugar, they all are manufactured goods. So let's study about the classification of industry. We have classified it on the basis of size, raw material, and end products and ownership. So let's study about the basis of size. So we have capital intent, we have cottage industry, small scale industries, large scale industry. Small scale industries होती है, ये small scale होती है, इसमें ज़्यादा आपको मशीन्स वगैरह की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. लेबर्स मतलब जो घर के लोग होते हैं वही आपस में क्या करते हैं, काम करते हैं, राइट. लाइक आपको कुछ भी, जैसे आपको हैंडीक्राफ्ट बनाना है, कोई बास्केट बनानी है, और दैट. सो लेट्स स्टडी अबाउट स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज. इसके लिए आपको लिमिटेड कैपिटल चाहिए, हायर करने पड़ेंगे स्किल्ड लेबर, राइट. मतलब ज़्यादा इसमें आपको ज़्यादा कैपिटल की जरूरत नहीं, ज़्यादा टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है, राइट. दे कैन जनरेट, दे मेनली प्रोड्यूस गुड्स फॉर डोमेस्टिक मार्केट, ठीक है. लार्ज स्केल आपको ज़्यादा कैपिटल चाहिए, ज़्यादा लेबर चाहिए, मशीनरी बहुत सारी चाहिए, ठीक है. फिनिश प्रोडक्ट को आपको डिस्ट्रीब्यूट भी करना पड़ेगा, उसके लिए आपको अलग डिपार्टमेंट्स भी बनाना पड़ेंगे. ये इसका वास्ट प्रोसीजर है, राइट. ऑन द बेसिस ऑफ रॉ मटेरियल, अगर हम रॉ मटेरियल की बात करें तो मिनरल, पेस्टोरल, मेराइन, फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री. सो फर्स्ट इज एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, जिसमें जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं. इंडस्ट्रीज आर प्लांट्स, एनिमल वेस्ट, शुगर मैन्युफैक्चरिंग, फूड प्रोसेसिंग, वेजिटेबल्स, ऑयल, कोकोनट, टेक्सटाइल, लीडिंग इंडस्ट्रीज द एग्जाम्पल ऑफ एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री. वहीं हम बात करते हैं मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज की. दे आर द रॉ मटेरियल ऑफ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री. आयरन एंड स्टील, कोल, पेट्रोकेमिकल, दे आर द मिनरल्स बेस्ड इंडस्ट्री, राइट. दे फीड ऑन अदर इंडस्ट्रीज. फॉर एग्जाम्पल द आयरन, इट इज एन इम्पॉर्टेंट रॉ मटेरियल फॉर मेनी अदर इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल, कंस्ट्रक्शन, राइट. देन वी हैव पेस्टोरल इंडस्ट्रीज. दे आर द इंडस्ट्रीज दैट ड्राइव देयर रॉ मटेरियल फ्रॉम एनिमल. These industries include milk products, जैसे चीज हो गया, बटर, गारमेंट, सिल्क गारमेंट, लेदर प्रोडक्ट्स, एंड they are generally the small scale industries. Processing of fish, another aquatic animal is classified. Now forest based industries, जहाँ से आपको हनी, फर्नीचर, ये सब मिलता है. Next is on the basis of ownership, private, public sector industry और cooperative. So private में क्या होता है, owned and managed by individual और group of interest, जैसे टाटा स्टील हो गया, अमूल हो गया, हिंदुस्तान मोटर्स हो गया. वहीं हम बात करें पब्लिक सेक्टर्स में, जो गवर्नमेंट ऑन होती है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इनको देखती है, जैसे बैंक, ठीक है, दुर्गापुर स्टील प्लांट, ये सब इस कैटेगरीज में आते हैं. भारत हैवी इंडस्ट्री, ये सब किस में आती है आपकी, इसमें. ज्वाइंट सेक्टर मतलब आपकी प्राइवेट फर्म भी देख रही है, गवर्नमेंट इंडस्ट्रीज भी देख रही है, जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड, गुजरात एल्कलाइज, दे आर ज्वाइंट सेक्टर. कॉपरेटिव की बात करें तो जब हम कॉपरेशन में, ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय प्रोड्यूसर और सप्लायर, लाइक मिल्क, सुधा घी, लिज्जत पापड़, ये सब क्या है, कॉपरेटिव. Now factors affecting the location of the industry. There are many factors. Like बात करें humid climate, cotton के लिए चाहिए होता है, because the thread out does not break, right? Then the location, ideal location होनी चाहिए, ठीक है. आपके जो coal mines है वो कहाँ होनी चाहिए, coal वो जहाँ से आपको हीटिंग और जो एनर्जी है वो निकले और वो दूसरे को हार्म ना करे, right? Like Vadodara and Mumbai, they have where natural gas are easily available, ठीक है. Cylinder industries are now in demand in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. 5 factors जो इफेक्ट करते हैं लोकेशन को और अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मेटेरियल को, वो आपके लैंड, वाटर एंड इंटरप्टेड पावर सप्लाई एट रोलर, स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर, कैपिटल, ट्रांसपोर्ट एंड मार्केट, बेस्ट सुटेबल क्लाइमेट एंड टेरेन, राइट, डिस्पोजल ऑफ वेस्ट एंड अदर इंपॉर्टेंट फैक्टर्स. Here some you can see that जैसे आपके इंडस्ट्रियल शेड्स हो गए जो चीपर रेट्स पे होते हैं, ये क्या करते हैं, और अदर इंडस्ट्रियल्स हो गए, जैसे आपके रोड्स हो गए, ट्रेन्स हो गए, ये आपके क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज को बैकवर्ड स्टेट में जाते हैं. और मोस्टली क्या होता है, रीजन इनकी कंडीशन फेवरेबल होती है, वो क्या एस्टैब्लिश करता है, ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री एंड व्हाट दे डेवलप इनटू लार्ज इंडस्ट्रियल एरियाज. यहाँ पे आपको कुछ इंडस्ट्रियल रीजन दिए हैं, कहाँ पे आपको आयरन देखने को मिलेगा, कॉपर, एल्यूमिनियम, ठीक है. दीज आर द डिफरेंट स्टेट्स हैव बीन गिवन. Distribution of major industries. So the major industries which will you read about this chapter is iron and steel industry. जो cotton होता है, textile industry होती है, information technology industry. Iron and steel industries को हम basic industry कहते हैं, because ये आपको basic to many other industries provide करती है.
ये बैकबोन है आपकी मॉडर्न सिविलाइजेशन, राइट? Now there are many stages converting iron ore into steel. Iron ore is mixed with coal and limestone and they are smelted together in the blast furnace. जो molten iron है वो run करता है into molds जिसको हम pig iron कहते हैं. So what happen after this solidify? It is hard and strong but very little, but very brittle as it is. It contains impurities और जो impurities होती है वो remove होती है. And pure iron to make steel. Steel is flexible and can also be made into any shape. जैसे sheet हो गई, wire हो गई, rods हो गई. Its vicinity is the where the raw materials are available. China, India, Russia, Ukraine, US and Japan, they are the steel producing country. If we talk about in India, steel plants at Bhilai, Bokaro, Durgapur, Jamshedpur, Royalkala, where they are located in Chota Nagpur Plateau region. ये आपका आयरन दिया हुआ है, कहाँ पे मिलता है? कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, जो कॉटन टेक्सटाइल है वन ऑफ द ओल्डेस्ट एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री है. Natural fiber uses for making cloth of cotton, wool, silk, hemp and flax. They are the basic material of textile goods. While cotton, jute, hemp and flax, they are of plant origin. Cloth is also made these days using synthetic material. जैसे nylon हो गया, polyester हो गया, rayon हो गया. Right? Cotton textile are mainly produced in the USA, China, India, Russia, UK. And India जो cotton textile industries है वो कहाँ पे located है? They are located mainly in cotton producing state of Gujarat, Maharashtra and Tamil Nadu. और जो मुंबई और अहमदाबाद है, 2 important centers है. And then if we talk about कानपुर, कोलकाता, नागपुर, सोलापुर, इंदौर, कोयम्बटूर, दिल्ली, ये भी क्या है? They are also the other centers in the industry. ये कुछ cotton textile centers हैं. Now information, IT की बात करते हैं. So information technology refers to modes through which people communicate in better. It includes storage, processing, distribution of information. Right? With intention of information technology, world has become global village. So the development of information technology it took place in the second half of the 12th century. इसमें आपका manufacturing होता है computer hardware, software and other modes of communication which help in transmission of information in digital form. जैसा आपका telecommunication है. The industries needs trained engineers. These engineers are trained in software, hardware and other related field of communication. Resource की जो availability है, cost and infrastructure है, they are the main factors. If we talk about industrial system, यहाँ पे आपको input, process and output all are required. Cost of land, infrastructure, raw material, labor, power and transport. The outputs are the end products and money earned from it. Next is industrial reason. Industrial reason increase when number of industries are related to each other and interdependent. For the products and byproducts clustered together. For example, in manufacture of sugar, brass, molasses, byproducts, such people purchase them from the sugar mill. जिससे वो क्या करते हैं? Government makes plan to establish an industrial reserve. जहाँ पे जितनी भी industries related and unrelated setups हैं उनको लगाते हैं. आप देखते हैं आपको इनपुट के लिए कॉटन ली, ह्यूमन लेबर, फैक्ट्री कॉस्ट है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है. आपने क्या करा? प्रोसेस करा, गिनिंग, स्पिनिंग, वीविंग एंड डाइंग. मनी मिला और उससे क्लोथ मिला. दो ही चीज तो मिलती है. Now many industrial regions of the world. So we have Eastern North America and Western and Central Europe, Eastern Europe and the Eastern Asia. Many industrial regions led to what tend to locate in the temperate areas near seaports and especially near cold. 8 industrial belts are there: Bangalore, Tamil Nadu region, Hooghly region, Ahmedabad, Vadodara region, Chota Nagpur industrial belt, Visakhapatnam, right, Gurgaon, Delhi, Meerut region, and Kollam, Thiruvananthapuram industrial cluster. Now industrial disaster. Disaster is sudden accident which cause great damage and suffering. Accident in industry occur due to negligence in handling of toxic and hazardous substance. जैसे भोपाल गैस लीक डिजास्टर 1984 में होता, वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर था. 1230 पे आया था, 3 दिसंबर 1984. ये हाईली पॉइजनस था, राइट? इट वाज हाईली पॉइजनस. It out the pesticide factory of Union. It affected sleeping people to several kilometers, right? So 1,000 died and more suffered from blindness and disease like impaired immune system, gastrointestinal disorder, and official death was 3,598. Gas well blew out of Goa, Chongqing, China, and left 243 people dead and 9,000 injured in December 2007. Now risk reduction management. So for the stock of toxic substance in a factory should be kept limited. The workers should be well trained.
right? Fire warning and fighting systems should be improved. Worker and their family living nearly should be aware of the store of toxics and hazardous material. इंडस्ट्रियल एरिया शुड बी सेट अप अवे फ्रॉम, भाई जो रेजिडेंशियल एरिया है ना उससे आपको दूर बनाना चाहिए इंडस्ट्रियल एरिया. रिवर ऑल्सो प्रोवाइड वाटर रिक्वायरमेंट, cooling machines. Some industrial regions concentrated near seaports, river ports and rail routes. What they enable convenient transportation of raw material and finished products. विशाखापट्टनम स्टील प्लांट हो गया, ये सी पोर्ट के पास है. Rise of manufacturing industries in suburbs, right? So anyhow, the low cost of production and suitable transportation are the two main factors for ideal location and development of industry. So iron and steel industries located in Germany, USA, China, Japan, Russia, India and other textile industry. It is concentrated in India, Hong Kong, South Korea, Japan, Taiwan. ये मेजर हब है किसके, आपके इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के. जैसे आपकी सिलिकॉन वैली होगी सेंट्रल कैलिफोर्निया, राइट? यूएसए एंड बैंगलोर एंड इंडिया, राइट? दिस इज ऑल इन दिस चैप्टर.